Hi, everybody. I'm sure you all are rocking, enjoying your life fully. If not, then it is high time. Let's learn something relevant from our guest for the day. Our guest is a versatile person. She is bubbly and charming, full of adventure and many more things. I have written something for her, and that is there is no limit for what we as women can accomplish. This goes well with Amrit ma'am. So please put your hands together to welcome on the virtual platform Amrit ma'am. All yours. Thank you so much, Richa. And thank you for having me on this show here today. Uh, what to say? You tell me. Most Yeah, welcome. ask me. Well, looking at your profile, the thing that amazes me is like you started your career from working, like you were working in a nursing institution, and then you shifted over to hospitality, and then you were working with lot of schools. So many things are there in your profile. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां से आपने अपने करियर जर्नी की शुरुआत करी. The very first place where you were working, there you got the opportunity to be with elders. So how it was? कैसे आपने काम करना शुरू करा, कैसे आपने कनेक्ट करा एल्डर्स के साथ? तो लाइक यू सेड कि मेरी जो जर्नी की शुरुआत है वो एक नर्सिंग होम से थी. वो बेसिकली कनाडा में बटास्क्विन नर्सिंग होम था जहाँ पे वी वर्किंग विद द एल्डर्स. आजकल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है अंतारा और इस किस्म का. ये उस किस्म की एक सेटिंग थी जहाँ पे बच्चे अपने एल्डर्स को छोड़ जाते थे and we were supposed to take care of them the whole day, and some would live there and the others would go. So I was basically taking care of the recreational center wahan pe, ओके. to keep the elders entertained and keep them going. Now, being an Indian, we know we are very, with our elders, the way we behave with them or the way we are very connected. So it Yes, was a very quick and easy job for me. It came naturally. It was not at all like a job. And I absolutely. realized, yeah, Because हम that's where I Indians, like as an India, we are full of emotions and we are empathetic. So I'm sure it just came to you naturally. It was not challenging for you. But what made you shift from this? कैसे आपने एक दूसरी इंडस्ट्री में जंप करा एकदम से? वो एक ऐसा टाइम था कि आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो कभी भी नो नहीं बोलते. हम्म. कुछ भी काम दे दो, काम बड़ा या छोटा नहीं होता. काम काम होता है एंड एंजॉय डूइंग थिंग्स. तो व्हेन आई वाज देयर, मैंने इट वाज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर मी. आई लर्नड अ लॉट अबाउट एल्डर्स जो अभी तक हमारे को मतलब हेल्प कर रहा है. Yes. एंड उसके बाद में फिर वापस आके एक शुरुआत थी कि चलो प्रोडक्शन लाइन देखनी है. खुद आई वाज इनटू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, ये वो शुरू किया. तो कैमरास के आगे काम करना और कैमरा के पीछे काम करने काम का कर. एक वो एक्सपीरियंस हुआ. एंड आई लव्ड द एंटायर आइडिया ऑफ वर्किंग बिहाइंड द कैमरा. सो दैट्स हाउ माय प्रोडक्शन लाइन आल्सो स्टार्टेड, वाओ. जर्नी स्टार्टेड. वाओ, तो सो आपका जब प्रोडक्शन लाइन में काम करा तो उसमें मेन टारगेट ऑडियंस या मेन थीम क्या रहता था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव, वी वर यूज, ये जो बड़ी बड़ी एड एजेंसीज होती है ना, वो अपना जितना भी जो वीडियो मेकिंग एंड जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, एड्स होती हैं, वो हाँ तो जी. काइंड ऑफ सब हमें हमारे जैसे प्रोडक्शन हाउसेस को मिल जाते हैं. सो वी ओके. हैड एंटायर अपना, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया. उस टाइम यस. में वी यूज्ड टू एक्चुअली Nowadays, कीप like बैक. we are happy working digitally, isn't it? और उस समय तो बिल्कुल अलग ही बात थी, है ना? I'm सच्ची में sure. हम्म. आज की डेट में अगर वही काम करना पड़ेगा, वी विल बी मिसफिट बिकॉज 90% ऑफ द वर्क हैज शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल वो. Digital. That's सो right. दैट, So हाँ from अभी media, बैंक. media, advertising, hospitality, and then finally you came in academics. You were there with Ecole Global International. You were there with Doon School. So how was your role with Ecole Global International Girls School?
I have to say I loved working with Ecole, because before joining Ecole, I worked with the Doon School for a very long time. फिर working in all boys residential school, not just a school, residential, the whole dynamic is different working there, then shifting to a girls school. So it was a pleasure working with your own sex like female ke साथ में. Hmm. And it's a wonderful school, बहुत अच्छी setting है. And I was allowed to work my way, मेरे को अपना full लिबर्टी था. potential मतलब वाओ. हम्म. liberty. So, and very girls were fantastic, connected very well, you know. So it was a lovely learning for me, and a beautiful place to work with the girls. वाओ. So that तो was, I'm very मुझे different लग रहा है from कि आपने सिर्फ अलग-अलग एज ग्रुप्स को ही टैकल नहीं करा है. यू हैव बीन विद द एल्डर्स, यू हैव बीन विद ओनली बॉयज, you have been with only girls school. So you are one person who is like meant to serve every human being, despite of the background or the culture that they have. जैसे कि आपने बताया, इकॉल ग्लोबल इज वन प्लेस वेयर यू आर वेरी हैप्पी क्योंकि आपको भी एक लिबर्टी मिल गई and you were able to showcase and highlight your potential. And then finally, Project Purukul came in picture. Am I right? absolutely. Right? क्योंकि प्रोजेक्ट पुरुकुल का क्या ऑब्जेक्टिव है? आप लोग तो वुमेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. हाँ जी। सो एक तो प्रोजेक्ट पुरकुल जो है, ये पता नहीं, ये मेरे गोदी में आ गया, इट जस्ट फेल इनटू माय लैप, आई नेवर न्यू कुड आई दैट आई कुड, मेरे को, आई वाज ऑलवेज इन सर्विस इंडस्ट्री, बिकॉज़ कुछ भी मैंने किया है, वर्किंग विद द एल्डर्स टू वर्किंग विद बॉयज और गर्ल्स, इट्स ऑलवेज बीन अ सर्विस इंडस्ट्री फॉर मी, आई डोंट बिलीव इन चैरिटी, आई बिलीव इन रिस्पांसिबिलिटी. So this was my responsibility to my क्या बोलते हैं, society. Now Project Purkul का क्या idea है? The entire idea is about creating employment opportunities for people, and helping stop migration. So these are two objectives that we basically work on. Um, Applique and patchwork is the natural skill that was available around. So we said, okay, fine. You have to pick something natural, which comes naturally, and they know. I have done enough of training, training in different क्या बोलते हैं trades में, but it doesn't really work. Training के बाद में उनको कोई ट्रेड में लेके आना, उसकी ट्रेनिंग का एक यूज करना, इट डजंट हैपन. सो वी सेड, डन विद ट्रेनिंग, जो ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं, जो स्किल्स अवेलेबल हैं, उन्हीं को वी विल वीव इट इन अ वे वेयर दे डू व्हाट दे कैन डू द बेस्ट, एंड लेट्स सी वेयर आवर पोटेंशियल लाइज, एंड वी डू आवर बेस्ट. सो दैट वेज देयर आर थ्री कैटेगरीज हमारी. एक तो हमारे आर्टिसंस हैं, लेडीज हैं, जो वर्कर्स. Then people like me who are in the middle, coordinators, we try, we reach out and we identify. That is my and I've got two other ladies, hamara job hai. Okay. Then there are youngsters, boys and girls of the young youth. They are doing the marketing and selling. So all are taken care of, and none of us अलग-अलग need to do फेजेस, anything once. अलग-अलग फेज पे काम कर रहे हैं. बिल्कुल. और सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम डून स्कूल और यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल और रिगार्डलेस ऑफ योर वो, at present we all are looking for employment. So instead of going out and looking for employment, how about creating employment, not just for self and for others also. So Yes. this is hamara, at the core, this is what we are doing. And always we work around handicraft, we work around some things which is something that is available around, and we don't have to go far flung. Raw material, Absolutely. everything jo aas paas hai. So when you're showing employment or you're showing money, हम्म. ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, वो सब चारों तरफ है, खाली आइडेंटिफाई करो, वर्क करो, एंड सही है, वंडरफुल. ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कि माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए, लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस, रीलोकेटिंग एंड लुकिंग एंड हंटिंग फॉर समथिंग टू अर्न, आपने वुमेन को
ये एम्पावर करा है, इक्विप्ड करा है, ताकि वो अपने आप अपने क्राफ्ट से ही, स्किल से पिकअप करें कि कैसे वो अर्न कर सकती हैं और अपनी फैमिलीज की भी केयर कर सकती हैं. So now बिल्कुल. my next question is, as you have mentioned that you have been a person who was able to take care of the budgeting also. So please give us 3 tips how to take care of the budgeting. बजटिंग में एक सच्ची बात बताऊं, आजकल बजटिंग मैं कम कर रही हूँ, मेरी लेडीज ज्यादा कर रही हैं. इट्स अ वेरी we females know how to budget, you know, whether you, हम अपने घर का किचन का बजट नहीं करते, हम अपना सब करते हैं. Just imply that on the वर्क उस पे, you know, make it as simple as possible कि हमको पता है कि हमने इतना रॉ मटेरियल लिया, इतने की प्रोडक्शन करनी है इस महीने, ओके फाइन, इतनी की प्रोडक्शन करनी है, लेट्स गो फॉर द रॉ मटेरियल, वेयर वी डू रॉ मटेरियल के ऊपर कितना है, फिर हमारी लेबर पे कितना लगेगा, कितना परसेंट हमें ऊपर से लगाना है, होल्ड करके रखना है मटेरियल, मतलब जो डन आइटम्स हैं, तो उनको होल्डिंग पीरियड के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना. यू हैव स्पेस, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड, उसके लिए भी वो करना है. फिर सम अमाउंट दैट यू वांट एज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से आधा पैसा दोबारा से हम लोग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, एंड Yes. हाफ मनी हाफ को रख देते हैं कि यू नो फॉर रेनी डे, या सडन उस पे आ जाए जरूरत हो, वंडरफुल, तो उसके वंडरफुल. लिए ये तो बहुत छोटे अच्छी चीज बताई छोटे. आपने. जैसे ही आपने बोला ना, जैसे हम लेडीज मैनेज करते हैं, तो मुझे तो ध्यान आता है, जैसे हम अपने किचन में चेक करते हैं आज मेरे फ्रिज में क्या क्या चीजें हैं. इफ आई हैव गॉट 3 people इन द हाउस, आई शुड बी एबल टू सर्व देम. एंड इफ आई नो दैट इन द इवनिंग आई माइट हैव 5 more people एज गेस्ट, तो मुझे कुछ ना कुछ रेसिपीज इंस्टेंट क्विक वाली पता होनी चाहिए कि कैसे मैं उनका भी ध्यान रख सकूं. सो इट वाज वंडरफुल हाँ, टू नो दीज टिप्स के कैसे आप अपने बजट को एक्चुअली में स्प्लिट करके और पूरा प्लान रेडी करती हैं, कब हमें कंट्रोल करना चाहिए, कब हमें कैसे किस चीज को हैंडल करना है. वंडरफुल टिप. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू, यू हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट as an athlete and taekwondo champion also. So, like, are you still doing something relating to your athletics or being a sports lover? कुछ time spend कर रहे हैं आप इसमें भी? I have always been into sports and yes, बोलते हैं ना, जैसे हम अपनी दिमाग की कसरत करते हैं, वह करते हैं. I love sports and I do keep myself, try to keep myself as fit as possible, you know. So थोड़ा बहुत हो गया, कभी योगा कर लिया. I get bored doing one thing, you know. I cannot imagine myself doing पूरे हर टाइम योगा. I cannot imagine running. कभी बाहर मौसम कैसा होता है. So depending on the weather and depending on how I feel like today, doing some मतलब वो करने, तो yeah, one thing is constant that I do meditate every day. ये ऊपर का खाली करना होता है. This is more important, you know. So every day I Now, rewire myself the either you day, you say know. कि ऊपर का खाली करना होता है, या आप कह सकते हैं ऊपर के उसको बहुत अच्छी चीजों से फीड करना होता है ना? दिन भर फीडिंग होती है ना, तो इन द मॉर्निंग वी डू. एक दफे पूरे बोलते हैं ना, वो होता था ना पुराने जमाने में, कैसेट्स होती थी हमारी, तो जब उसको ऊपर कुछ हमें चढ़ाना होता था, तो व्हाट डू वी यूज टू डू, पहले पूरा इरेज करो फिर करो. सो आई बिलीव इन दैट कि अगर दिन की शुरुआत करनी है, तो पहले जो क्लटर है उसको थोड़ा सा डी उसको क्लटर कर लो, हटाए. ताकि यू आर यू रेडी नो फॉर द डे. फोकस. यस. जैसे एब्सोल्युटली. हम बोलते तो हैं दैट इज अनलर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, है ना? तो हमें वो अनलर्न भी बार बार करना है. देखिए, ये इतनी एक्सपीरियंस लेडी है और ये हमें ये टिप दे रही है, तो प्लीज इस पे वर्कआउट करिए. चाहे आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं या काम करते हैं, रिमेम्बर दिस रूल ऑफ लाइफ. आपको पिछले वाले उसको भुला के नई चीज सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे और काम पे भी फोकस कर पाएंगे. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज यू नो दैट लाइक दिवाली इज अप्रोचिंग, एंड यू बीइंग अ पर्सन हु हैज बीन एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर द सोसाइटी एंड अपलिफ्टमेंट, तो आप हमें क्या वैल्यू एडिशन, क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि दिवाली सेलिब्रेशन हमें कैसे करना चाहिए?
दिवाली सेलिब्रेशन आई मतलब अगर आज हम देखें एनवायरमेंट और ये सबको भी देखते हुए करें तो ज्यादा से ज्यादा जो असल मायने में दिवाली मनाई जाती है, जैसे जो पुराने जमाने में जो हमारे दादे परदादों से भी पहले की बात कर रही हूँ, तो अगर हम वापस हर चीज में हम इको उसमें जा रहे हैं, हम लोग हर चीज में पीछे को जा रहे हैं, तो अगर हम दिवाली में भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बहुत सारी चीजें अपने आप फिक्स हो जाती हैं। हम यस, पटाखों को नो बोल के ज्यादा दिए जलाएं, अपने उतना करें, और हमारे जो इंस्टेड ऑफ बाइंग स्वीट्स और मिठाई वगैरह जो बाहर से हैं, अगर हम अपने घर में थोड़ा थोड़ा बनाएं, पूरी दुनिया को क्यों देनी है दावत, जो भी दे रहे हो बना रहे हो थोड़ी बनाओ, मेक इट मोर फैमिली ओरिएंटेड। पार्टीज बड़ी बड़ी करने की जगह हम अगर अपने फैमिलीज को एक साथ करें एंड स्पेंड टाइम। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड फैमिलीज, फैमिली, नॉट जस्ट लाइट्स लाइट्स लगा के भर दो और उसके बाद में ये पार्टी हॉपिंग के लिए चले जाओ। एंड देयर सच ब्यूटीफुल festivals in India. यस, Diwali is also one of them. So there are just few things there to be done. घर का खाना बनाओ, get involved in those little rituals, where they are so important in life, because आजकल rituals रहे ही कहाँ हैं। तो एंड पुराने उसमें क्या होता, फैमिली को एक साथ कर लेते, एक वो बोलते हैं ना गुजिया बनाते थे, या होली वो पे, कोई मिठाई बनती थी, ऑल दोस थिंग, उसमें क्या होता था सब लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, तो यस, इट वाज टू ब्रिंग everything, brought the family together. So those are those traditions which are going away, and that is what's happening is, सब लोग देखो अभी दिवाली होएगी, बहुत कम घर हैं जहाँ पे पूजा होती है, तो होता है पूजा होगी उसके बाद में ऑल गायब, कहाँ जा रहे हैं, वो इधर यस, पार्टी में जा रहा है, वो उधर जा रहा उधर पार्टी है, में। जिस घर में, या वो घर घर खाली है दोबारा। सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस आप। दिस इज लाइक द सैडेस्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग, बट एज यू पॉइंटेड आउट, मैं तो एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं, तो मैं मेरे भी माइंड में वैल्यूज कैसे इनकलकेट करें, यही मेरे को एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं। तो मैं भी यही ऐड करना चाहूंगी, दिवाली बीइंग अ फेस्टिवल, इंडिया का सबसे बड़ा हम इंडियंस के लिए फेस्टिवल है, और दिवाली बोलते ही मुझे तो फैमिली याद आता है। तो जैसे अमृत मैम ने बताया, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फैमिली के साथ है तो ही दिवाली है। और फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनके साथ एंजॉय करें। वो कैसे कर सकते हैं, अभी आपको एक वैल्यू टिप दी है कि आप अगर मिल के मिठाई बनाएंगे, चाहे वो बेसन का लड्डू बनाइए, चाहे मिल्क मेड से कुछ रेसिपीज क्रिएट करिए, चाहे कुछ भी बनाइए, छोटी से छोटी चीज, उसमें आपको मजा भी आएगा, सब लोग इकट्ठे भी होंगे, और आप एक फेस्टिविटी स्पिरिट भी कर सकते हैं इन्वॉल्व। उसके साथ साथ एक और चीज जो ऐड होगी, वो होगी दैट यू विल बी एबल टू गिव वैल्यूज एंड द ट्रेडिशन एंड कल्चर, यू नीड टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। सो हाउ विल दे लर्न? उनके तो समझ में यही आता है दैट दिवाली मीन्स अ बिग पार्टी, इजंट इट? जैसे कि अभी नवरात्रे थे, बहुत कम जगह हमें पूजा देखने को मिली। इनफैक्ट एवरीबडी वॉज गोइंग आउट फॉर अ डांडिया पार्टी एंड स्पेंडिंग lavish amount. So when I asked a child of studying in class 6th, नवरात्रे के बारे में कुछ बताइए, तो उनको कुछ भी मालूम नहीं था। तो ऐसा नहीं होना या चाहिए। Wonderful. I can see that you got the opportunity to be in the Republic Day parade as a guard of honor to late Prime Minister Rajiv Gandhi. My God, आपका कैसा रहा ये experience? How were you feeling at that time? Oh, trust me. This was that was my best time, I would say. एक यूथ का होता है ना कि you look forward to, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वो सुबेरे तैयार होके जाना, पहले एक महीने तक उधर प्रैक्टिस करनी, यार, एंड बाय द वे, एनसीसी का जो वो रिपब्लिक डे कैंप है, दैट्स द बिगेस्ट, बोलते हैं ना, यूथ कैंप इन द वर्ल्ड। इतना यूथ कहीं भी एक साथ इकट्ठा नहीं होता जितने यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हमारे वहां होते हैं। एंड वंडरफुल कल्चरल प्रोग्राम्स एंड द प्रिपरेशन, सो डेफिनेटली इट वाज, बोलते ना, अपनी यूथ की उसमें दिस वाज द टॉप पीक हमारा वो था। एंड जितने भी हम लोग उस परेड में हमने किया था, वी वेंट फॉर एन एक्सचेंज आफ्टर दैट, यूथ एक्सचेंज। सो ऑल द 21 of us,
वहां से मतलब सिलेक्शंस होती है ना डिफरेंट यूथ एक्सचेंजेस की. So Okay. we went for Indo-Canada Youth Exchange. So there were 21 Indians. We represented our India. You know, अलग-अलग states. That time 21 states ही होते थी. तो अब तो Okay. बहुत. अच्छा. So each one अपने अपने वहां से करके, and we went for this exchange. So we are Wow. till date in touch with each other, and हम अपनी अपनी और सब कोई टचवुड अपनी अपनी फील्ड में doing great एक्सेल कर jobs, रहे you हैं. know, वंडरफुल. contributing जो तो वेरी प्राउड you know. मोमेंट. हाँ, बहुत प्राउड मोमेंट Absolutely. रहा होगा आपके लिए. आपने And you know, आसरा आपने आसरा ट्रस्ट और फ्रेंड्स ऑफ डून के साथ भी काफी काम करा है. सो व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाउ आर यू हेल्पिंग दीज पीपल? see, friends of Doon, we try. That's environment को लेके है उनका जितना भी जो issues हैं सब कुछ है. From time to time वो जो भी program बनाते हैं या देते हैं या चॉक आउट करते हैं, उसमें हम लोग participate करने की कोशिश करते हैं. अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें we add a youth wing to Friends of Doon, where we want to, you know, uh, work collectively towards the environmental issues उस पे. And as Asra Trust, well, Asra Trust has always been very close to my heart because हम लोग I'm one of the founder members उनके साथ में. We started वो बिंदाल के नीचे से, and then Shaila did lovely job. Neetlu also, I mean, they are doing fantastic job in Dehradun. तो वो यस. वहां वहां पहुंच रहे हैं जहां जहां हम लोग मतलब वैसे कोई नहीं पहुंच पा रहा, और काफी उन्होंने कवर किया है एरिया इन डूइंग वेरी गुड जॉब. I will be joining and looking forward to start with the skill development because उनका ये अभी skill development का शुरू होने वाला है segment. तो ओके. जो मैं यहाँ पुरकुल में कर रही हूँ उसी तरीके से I want to start something where उनके साथ भी. people they just हाँ बिल्कुल खाली ट्रेन ही ना हो, पर you know come out with something where they will be involved, अपना लाइफ में आगे बढ़े और पैसे एब्सोल्युटली. कमाएं. they do, you know, यस. because that's what they want to do at the end of the day. So एब्सोल्युटली. good आपने program. जो चोपड़ा के साथ भी आई एम श्योर काफी काम करा है, लतिका रॉय में. तो वहां पे जी आपने जी. कैसे टैकल करा? बिकॉज दे आर डीलिंग विद स्पेशल चिल्ड्रन एज वेल. सो हाउ डिड यू I मैनेज? हाँ I started my work जो ये officially जो social service का हुआ है था with Joe Chopra only. So I used to take care of their awareness wing, you know. And in fact, Shaila and I, we were there, both of us. That's how वहां से फिर हम निकल के हमने किया है. She used to take care of the fundraising, and I used to take care of awareness. So and I did get an opportunity, thanks to Joe Chopra, for मतलब to go for a workshop and you know learn about more about disability and how they. So abhi I won't call it disability. It's the ability that we need to see. हम यस. हमेशा डिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. So बिल्कुल. there is so much बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. यू वोंट बिलीव रिचा, एक बारी उनके साथ काम करने से मुझे अभी कहीं पे ना ये डिसेबिलिटी नहीं दिखती है. अभी हम्म. सब में पोटेंशियल दिखता है. तो यस. अगर हम लोग कोई अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं एंड ही इज ब्लाइंड, तो हमारा दिमाग में क्या आता है? ओ, ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग अ रोड. वी डू नॉट अप्रिशिएट, वाओ मैन लुक ही इज क्रॉसिंग रोड यस. नहीं है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन पहले आता है. यस. सो वी आर सो कंडीशन, वी आर वेरी कंडीशन, यू नो. तो वो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. uh, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. बिल्कुल ठीक. आप विकी के साथ भी काम कर रहे हैं और आपने ये लोक पर्यावरण शिक्षा संस्थान के साथ भी काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका क्या मेन एम है? जो विकी है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ का है. अब वो देहरादून में थोड़ा स्लो पेस पे है यस. यहाँ पे. तो मैं बिकॉज विकी इज वेरी एक्टिव हियर, यस. बेसिकली सेम उनका वो रहता है. सो वी डू वॉट एवर वी कैन. इतना कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, बट मे बी इन 2024 वी विल ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड.
एंड द अदर वन लोक पर्यावरण शिक्षा संस्थान, उनकी उस पे आई एम अ डायरेक्टर. वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन ऋषिकेश. वी वर्क Okay. विद द वेस्ट मैनेजमेंट देयर. सो वहां पे जितने भी ये जो कचरे को कलेक्ट करते हैं, रैग पिकर्स हैं, उनके साथ काम का चल रहा है, अप स्किलिंग का चल रहा है, स्किल बच्चों के साथ में काम चल रहा है इन एजुकेशन एंड ऑल. सो इट्स ऑल Okay. अराउंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड गंगा क्लीनिंग एंड ऑल दैट. सो Wonderful. वो है. तो We all would like to say a big thank you for doing so many things for the upliftment of society. और आप सबको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेक्टर नहीं है या कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारी सोसाइटी का जो इन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा है या जिसके लिए ये कुछ नहीं कर रही हैं. She's across the whole world. I believe she's everywhere and trying to spread positivity, happiness in her own way. So, thanks a lot for sparing your valuable time. It was a pleasure having you here. Thank you. थैंक यू सो मच, रिचा. थैंक यू. थैंक यू सो मच.